every breath, explore the depths of your consciousness. Pierce into the etheric inner realm, which is indestructible, which is imperishable, which is unformed.
गुड मॉर्निंग। बाकी लोग अभी तक आए नहीं है। जब मैं अरे संगीता जी, Yes, sir. Good morning. हेलो। Hello. गुड मॉर्निंग मैडम। Good हाँ, morning. बहुत टाइम बाद देखा आपको। Hmm. ये चीज, एक मिनट। मैं जब करता हूँ 7-5 बजे, तो पीपल टू कम एट 7:10। जब मैं 7:10 के 7:15 आते। यू नीड टू लर्न दिस टू कम इन टाइम। आई डोंट नो। संगीता आपने आप आज ही आई ना? मैंने पहले नहीं किया मैंने अटेंड। After a very, very long time. हाँ, तो मतलब ये हमने बुक का जो किया ना, हाँ. दिस बुक अबाउट 7 हैबिट्स, इसको Hmm. इन्होंने क्या किया, 7 हैबिट्स बाद में बताइए। ही इज टेलिंग हाउ द लाइफ इज वर्किंग। तो ये जानना बहुत जरूरी था। उनका बोलना है कि लाइफ बहुत चेंज हुई है। ये Hmm. 7 हैबिट्स कभी भी काम आएगी, मगर आज के दिन ये बहुत जरूरी है, बिकॉज द इरा हैज चेंज फ्रॉम, हम लोग केव में रहते थे, देन वी बिकम एग्रीकल्चरलिस्ट, देन Hmm. इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड नाउ वी आर इन अ इंफॉर्मेशन इरा, अभी तो एआई। Hmm. देयरफॉर द हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Hmm. क्योंकि अभी ये ना सबकी ख्वाहिश से बढ़ गई है। एवरीबॉडी वांट मोर, एवरीबॉडी वांट टू हैव समथिंग नाउ। देयर इज लॉट ऑफ Hmm. कंपटीशन, लॉट ऑफ डिप्रेशन। ऑल दीस थिंग्स आर गोइंग ऑन बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। Hmm. तो अभी इरा बहुत बदल गया है, बहुत कुछ चेंज आया है, तो यू नीड दिस 7 हैबिट्स टू बिकम सक्सेसफुल। इनका बोलना है कि देयर आर पीपल, दे विल गिव यू 17 18 20 हैबिट्स, 20। तो ये 100 देता है, इन्होंने 7 हैबिट्स में सब डाल के रखा है बराबर। Hmm. तो Hmm. इनका क्या बोलना है, देयर इज अ पर्सनालिटी एथिक्स एंड देयर इज कैरेक्टर एथिक्स। पर्सनल एथिक्स क्या होता है? आपका पहनावा, आप किससे बात करते हो, किस ढंग से पेश आते हो, यू नो, ऑल गुडी Hmm. गुडी थिंग्स जो आप दिखाते हो बाहर, Hmm. विच इज नॉट रियल। आप खाली दिखावा करते हो। वो भी जरूरी है। आप जाते हो मीटिंग में, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे शूज होने चाहिए, बात करने तजीब होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज द कैरेक्टर एथिक्स जो आपके Hmm. अंदर में। जैसे Hmm. इनका बेटा था, वो थोड़ा अलग अलग टाइप, नॉट मन बुद्धि, बट डिस्लेक्सिया, क्या बोलते हैं, डिस्लेक्सिया, हाँ. डिस्लेक्सिक था। तो हाँ. उसको वो समझ आता, जब वो खेलते ना बॉल, बेसबॉल, तो बॉल कितना स्पीड से आ रहा है, कौन से डायरेक्शन में आ रहा था, आ रहा है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, ही कुड नॉट परसीव इट। और वो मार नहीं पा रहा था, तो कभी भूल से लग गया तो वो वाह वाह कर देंगे। सो ही यूज्ड टू ट्राई टू मोटिवेट हिम। बाद में वो देखा काम क्यों नहीं कर रहा है, कोई आदमी इसको कुछ बोले बच्चे को, तो उसको मतलब ये बोल देना, गुस्सा करना उस पे। ये वो कर रहे थे, ये होता, और उसकी वाइफ। बाद में उन्होंने, ये फर्क क्यों नहीं हो रहा है? देन दे रियलाइज दैट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू पुट व्हाट वी फील ऑन हिम। जो हमको Hmm. अच्छा लगता है वो हम उस पे थोप रहे हैं। Hmm. वी आर ट्राइंग टू प्रेशर हिम टू डू व्हाट वी लाइक। So it is better to what do you call it? Look at his strength and expand his strength. Let bring out his potential. Hmm. So that is character ethics. Character ethics क्या होता है? Ethics सबके अलग अलग होते हैं। कैरेक्टर Hmm. किसमें क्या मजबूती है, किसमें क्या स्ट्रेंथ है। इन जनरल कैरेक्टर से अच्छा आदमी होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, वो सब बराबर है। पर अंदर Hmm. की जो होती है स्ट्रेंथ, दैट शुड कम आउट। कोई इज गुड आर्टिस्ट है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है, डिफरेंट। और एक Hmm. बोलते हैं प्राइमरी ग्रेटनेस एंड सेकेंडरी ग्रेटनेस। मतलब कोई चीज है ना, मतलब वो प्राइमरी, जैसे अच्छा बोलना, अच्छा सोचना किसी के लिए, अच्छा काम Hmm. करना, काम सीखना, स्किल सीखना, दैट इज प्राइमरी। सेकंड Hmm. इज मतलब थोड़ा ना अच्छी बात करना, थोड़ा अच्छा दिखावा करना। तो सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी एथिक्स, उस पर हमने अपने बात की थी बाद में। एंड देन वी Hmm. केम अप टू दिस, इनिशिएटिव लेना है, एक्शन लेना चाहिए हमें। तो ये सारे हैबिट्स इसी है बनाई है उन्होंने, कि एक तो होता है प्रोएक्टिव होना, है ना। Hmm. इनका क्या, दो पार्ट है। इंडिपेंडेंट, मतलब टू बिकम इंडिपेंडेंट, वी आर डिपेंडेंट फर्स्ट। व्हेन वी आर चाइल्ड वी आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, Hmm. देन वी बिकम इंडिपेंडेंट। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, खुद से पढ़ाई करते हैं, एंड देन वी गो आउट एंड वर्क विद द टीम, वी बिकम Hmm. इंटरडिपेंडेंट। Hmm. तो पहली जो 3 हैबिट्स है, प्रोएक्टिव, Hmm. स्टार्ट विद एंड इन माइंड, एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये है इंडिपेंडेंस के लिए, कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। Hmm. देन यू गो आउट, विन विन सिचुएशन। फिर वो क्या है,
वो दो हैबिट्स याद नहीं आ रही मेरे को. एंड लास्ट इज, सेवंथ वन इज द शार्पन योर सो, कि हमेशा आप अपनी स्किल को शार्पन करते रहो, बी अहेड. Hmm. Hmm. तो थर्ड में तो इंटरव्यू में उसमें विन विन था. अंडरस्टैंड, पहले सुनो किसी का, उसको समझिए और फिर समझाओ. हमारी आदत क्या होती है, हम अपने आप को समझाना चाहते हैं पहले. सो दिस वाज वन ऑफ देम. और एक और था, अभी याद नहीं आ रहा है. इसमें देख लेते ना कौन सा बुक. शायद जस्ट शेयर द बुक फर्स्ट. हैबिट्स का एक बड़ा, ये पब्लिक वेक्टर के लिए एंटरटेनमेंट के सिनर्जी, सिनर्जी, विन विन, सीक टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड, एंड सिनर्जी. ओके. तो हम लोग यहाँ तक आए. बाद में हमने ये लिखा है टेक इनिशिएटिव. हमको इनिशिएटिव लेना चाहिए टू बी प्रोएक्टिव. ये प्रोएक्टिव के अंदर की हम ये सब बात कर रहे हैं. अभी चल रहा है अभी हमारा ये प्रोएक्टिव, फ्रीडम टू चूज. प्रोएक्टिव से क्या होता है आदमी का, देयर इज अ स्टिमुलस. हाँ, ये ले गया, देयर इज ऑलवेज अ स्टिमुलस. कोई आपको चिढ़ाता है, कोई आपको कुछ बोलता है, कोई अच्छा बोलता है, जो भी स्टिमुलस है उसका रिस्पॉन्स होता है. पीपल रिस्पॉन्ड, पीपल रिएक्ट. एक्चुअली वी शुड लर्न टू रिस्पॉन्ड. So when you are Hmm. proactive, you have freedom to choose. आपको क्या चूज करना है, लाइक सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कॉन्शियस एंड इंडिपेंडेंट विल. ये इसमें घूमता है हमारा. सो वी विल नॉट रिएक्ट. कोई मेरे को समझो किसी ने गाली दे दी, एक तो मेरे का ऐसा पहले कैसे था कि गाली दिया तो मैं इमीडिएट भड़क जाने का. नाउ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, भाई इसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है, एंड आई बिकम रिस्पॉन्सिव. मैं उसको समझ के बात करता हूँ. हो सकता है वो आदमी खराब भी हो सकता है, पर एक है कि मैं अपने आप को दुख नहीं देता हूँ. अभी मैं इतना, वो पहले गुस्सा आता है, गुस्सा नहीं आता है, और अपनी लाइफ खराब नहीं करता हूँ. सो दिस इज द डिफरेंस. तो वो हम लोग मैजिक बुक किया, आपने वो तो किया हमारे साथ मैजिक बुक. वी आल्सो डिड मिरर वर्क. दिस इज थर्ड बुक. Hmm. यस. तो अभी कोई आया है कि नहीं, हम लोग चार ही जने हैं. एनीबडी कैन रीड. I'll एक मिनट read. पहला. हाँ, एक ना मैं लाइव तो गया, लाइव हो ना, हाँ लाइव हुआ. यस यस. प्लीज प्लीज. Where should I और read? टू बी एक्टेड अपॉन. Okay. Act or to be acted upon. The difference between people who exercise initiative and those who, just a second, sir. Yeah. Those who don't is literally the difference between night and day. I'm not talking about a 25 to 50% difference in effectiveness. I'm talking about a 5,000 plus percent difference, particularly if they are smart, aware, and sensitive to others. It takes initiative to create the P or PC balance of effectiveness in your life. It takes initiative to develop the 7 habits. As you study the other 6 habits, you will see that each depends on the development of your proactive muscles. Each puts the responsibility on you to act. If you wait to be acted upon, you will be acted upon. And growth and opportunity consequences attend Attend either road. either road. Yeah. With both opportunity, it can go to any road. Act or Hmm. it will be acted upon. Hmm. आप नहीं लोगे एक्शन, आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा. मतलब somebody else will go ahead. पर Hmm. इस पे हम लोग ये मेरे को आप बताना रह गया, पी और पीसी बैलेंस. पी इज प्रोडक्ट Hmm. एंड पीसी इज प्रोडक्ट कैपेसिटी. Okay. जैसे आपने वो घुस का सुना होगा कि द घुस इज टू गिव गोल्डन एग्स, Hmm. और वो बंदे ने घुस को ही मार दिया Hmm. एग निकालने के लिए. सो व्हेन इट किल्ड द घुस, इट स्टॉप्ड गिविंग एनी एग्स. Hmm. सो वी हैव टू समझ, यू हैव गॉट अ गुड मशीनरी, मैडम, Hmm. and you are working on that machinery, you are getting good product. So you Hmm. have to see to it that if you get a lots of order, you have to simultaneously maintain also. थोड़ा ऑयलिंग कर लो, थोड़ा ये कर लो. If you don't maintain, it will use some product up to some time, and then what will happen? The machine will not work. Hmm. तो पीसी बैलेंस में जैसे हमारी बॉडी है, हमें तो हमें Hmm. अपने आप को भी स्किलफुल करना है, हमको अपने आप को मेंटेन करना है. We have to मतलब do exercise, we have to do meditation, breathing work, ये भी सब है. Study every day, self growth, and all these things to keep ourselves a person of a good capacity, so we can have a capacity to produce more and more. तो हमारे पे भी लागू पड़ता है, एंड इवन ऑन द मशीनरी. तो इन्होंने बोला यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शन. ये इतना बड़ा फर्क है, 5,000 इसका फर्क है परसेंटेज का. पर्सन Hmm. टेकिंग एक्शन, नॉट टेकिंग एक्शन.
वन हु टेक इनिशिएटिव लेता है और एक्शन लेता है, he will surely succeed. धीरे धीरे करके बट he will succeed. कभी भी है ना, रंगदार नाम देखा होगा कि कोई भी आदत है वो धीरे धीरे बढ़ती है, कोई भी नया स्किल है वो धीरे धीरे आप रोज करोगे, इट विल बिकम मच बेटर एट इट. यस मैम. At one time, I worked with a group of people in the home improvement industry, representatives from 20 different organizations who met quarterly to share their numbers and problems in an uninhibited way. This was during a time of heavy recession, and the negative impact of this particular industry was even heavier than on the economy in general. These people were fairly discouraged as we began. The first day, our discussion question was, what's happening to us? What's the stimulus? Many things were happening. The environmental pressures were powerful. There was widespread unemployment, and many of these people were laying off friends just to maintain the viability of their enterprises. By the end of the day, everyone was even more discouraged. यस, तो एक मतलब बोलते हैं, एक तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, Hmm. where we used to share in uninhibited way, मतलब बिंदास बात करते थे. Hmm. दिस वाज ड्यूरिंग अ डे ऑफ हेवी रिसेशन, जब बहुत रिसेशन आया और Hmm. नेगेटिव इंपैक्ट होने लगा, और उसकी इंडस्ट्री जो थी उस पर खास करके ये होम इंप्रूवमेंट है ना, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, Hmm. पीपल विल कीप इट लास्ट. तो दिस पीपल वर फेयरली डिस्करेज्ड, और तब उन्होंने सोचा कि ये स्टिमुलस क्या है, व्हाट इज कीपिंग अस डिप्रेस, और हमको क्यों हम ये हो रहा है, क्या हो क्या रहा है हमारे साथ. तो Hmm. स्टिमुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो Hmm. एनवायरमेंटल प्रेशर और वेरी पावरफुल, Yeah. वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा था, पीपल बीइंग लेट डाउन. गुड मॉर्निंग सुविधा. तो ये सारा देख के आदमी को घबराहट हो रही थी, दे फीलिंग डिस्करेज्ड. ओके. Hmm. यस मैम. The second day, we addressed the question, what's going to happen in the future? We studied environmental trends with the underlying reactive assumption that those things would create their future. By the end of the second day, we were even more depressed. Things were going to get worse before they got better, and everyone knew it. When they studied, they understood it will go much worse. तो और घबरा गए. Yes. So on the third So on the day, third day, we decided to focus on the proactive question. What is our response? yeah, What are we going to do? How can we exercise initiative in this situation? In the morning, we talked about managing and reducing costs. In the afternoon, we discussed increasing market share. We brainstormed both areas, then concentrated on several very practical, very doable things. A new spirit of excitement, hope, and proactive awareness concluded the meetings. At the very end of the third day, we summarized the results of the conference in a three-part answer to the question, how's business? Part one, what's happening to us is not good, and the trends suggest that it will get worse before it gets better. Part two, but what we are causing to happen is very good, for we are better managing and reducing our cost and increasing our market share. Part three, therefore, business is better than ever. yes. तो और खबर आई कि और खराब होने वाला है, तो और घबरा गए. Then they decided to find what are they going to do. ये प्रोएक्टिव की बात होगी ना. तो पहले उन्होंने सोचा कि ट्रेंड कैसा है, हमारे से क्या हो रहा है, फिर पार्ट टू से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या दे पाते हैं, और पार्ट थ्री में क्या लिखा है, therefore business is better than ever, क्योंकि उन्होंने रिड्यूस कॉस्ट कट कर ली, मार्केट शेयर बनाना शुरू, क्योंकि जैसे कॉस्ट कट होगी, ऐसे जब ये टाइम होता है रिसेशन का, तो आदमी जल्दी खरीदता है वो, तो मार्केट शेयर बढ़ गया, तो उनको वो हिसाब से उन्होंने शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड अर्निंग आल्सो. therefore business is better than ever बोलते हैं पार्ट थ्री में. Yeah, It sir, became I much would like better. to share. Yeah, I would like to share in life, whatever happens, I Yeah. mean, mainly the obstacles. If we embrace the obstacles, there will be new doors opening up for us. We have to embrace the obstacle. That is We our have to path. embrace. That, We yeah, cannot or fight. you have Yes, to yes, accept it. If you accept it, you will find a new way to go ahead. absolutely. Yeah, The more we resist, more it persists. yeah, exactly. Yeah, you So know, we have you to are, yeah, embrace it, we have to understand it, और उसी में से सोल्यूशन निकलता है. exactly. एक्चुअली ना मैडम, हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी होती है, हम ढूंढते नहीं कई बार. Hmm. एवरी प्रॉब्लम कम विद एन अपॉर्चुनिटी. Hmm. जैसे एक आदमी पूरा खत्म हो गया बिजनेस में,
तो उसको इतनी मतलब वो जो आदमी पॉजिटिव होगा, इफ इज विद पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, तो Hmm. उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कुछ करके दिखाओ. हाँ. Some of them like Yes, only challenges. उनको तो बोरिंग होता है, चैलेंज नहीं होता है, तो some नहीं होगा obstacle, तो they like obstacle. कुछ तो होना चाहिए So लाइफ में. that Yes. now what would a reactive mind say to that? Oh, come on, face facts. You can only carry this positive thinking and psych approach so far. Like approach. Sooner or later, you have to face reality. But that's the difference between positive thinking and proactivity. We did face reality. We face the reality of the current circumstance and of future projections. But we also face the reality that we had the power to choose a positive response to those circumstances and projections. Not facing reality would have been to accept the idea that what's happening in our environment had to determine us. Businesses, community groups, organizations of every kind, including families, can be proactive. They can combine the creativity and resourcefulness of proactive individuals to create a proactive culture within the organization. The organization does not have to be at the mercy of the environment. It can take the initiative to accomplish the shared values and purposes of the individuals involved. Yes. तो Very, इन्होंने very true. मत बोला, Jitin ji, good morning. Now, what would a reactive mind say to that? Come on, face the fact. मतलब क्या होता है मैडम, मैंने देखा संगीता मैडम, Hmm. कि गुड मॉर्निंग जब आदमी का गुड मॉर्निंग, जब आदमी का टाइम खराब आता है ना, तो उसको लगता है सब खराब होना है, तो बोलता है फेस द फैक्ट. बट देयर Hmm. आर टू टाइप ऑफ फैक्ट. Either I do something and I come out, Hmm. I don't do anything and I fall. So वो बोलते हैं ना, I can या I cannot, both are true. If you say Hmm. I can, there are lots of opportunities opening for you, Hmm. lots of possibilities. And when you say I can't, you are immediately right. आप सब काम छोड़ दोगे और काम नहीं करोगे. तो ऐसे भी नेगेटिव जो होता है ना संगीता मैडम, वो तो भर भर के आता है ऑटोमेटिक. उसको आपको Hmm. पैदा नहीं करना पड़ता है. जैसे वीड्स को पैदा नहीं करना पड़ता है, पर फ्रूट को उगाना पड़ता है, सब्जी को हाँ, उगाना पड़ता है. So सच्ची. all this have to be, you know, we have to sow them, you have to till them, you have to water them, you have to give sunshine and all these things. But to Hmm. negate weeds, you don't have to do anything. It will automatically come Hmm. out. Hmm. तो इसलिए जब पॉजिटिव होना है तो we have to work on ourselves. Other we can do. So you have to be proactive, because when you are proactive and you think positive, both coming together will change the environment. Otherwise, the environment will change you. Either you change the environment or the environment change you. So you either act or get acted upon. So business community groups or business community groups, organizations of every kind, including families, can be proactive. हम सब प्रोएक्टिव होते हैं, मतलब कुछ होने वाला बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, वी स्टार्ट एक्टिंग अगेंस्ट दैट, so that we hold that thing, we stall that wrongness. So they can combine creativity and resourcefulness of the proactive individual to create a proactive culture. What will Hmm. combine the creativity and what resource he has, वो सब कलेक्ट करेंगे, सबका अपने फैमिली में कहीं भी है, तो वी विल क्रिएट अ प्रोएक्टिव कल्चर. एक कल्चर बन जाएगा प्रोएक्टिव होना विद ऑर्गेनाइजेशन. द Hmm. इनिशिएटिव टू accomplish the shared value, जो हम शेयर करते वैल्यूज एक Hmm. जैसी है, एंड पर्पज ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व, ये सबसे बड़ी बात है. ये जब टीम वर्क होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज द शेयर्ड वैल्यू. यू शुड हैव अ शेयर्ड वैल्यू और एक अपना इंडिविजुअल शेयर्ड वैल्यू एंड पर्पज ऑफ द इंडिविजुअल. एक आदमी का पर्पज, वैल्यूज पूरा टीम का होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन का, बट द पर्पज भी होना चाहिए इंडिविजुअल का, हर इंडिविजुअल का अलग पर्पज होना चाहिए. व्हेन यू डू दिस एंड यू बिकम प्रोएक्टिव, तो एवरीथिंग कैन चेंज. यस मैम. Listening to our language, because our attitudes and behaviors flow out of our paradigms. If we sit, if we use our self-awareness to examine them, we can often see in them the nature of our underlying maps. Our language, for example, is a very real indicator of the degree to which we see ourselves as proactive people. The language of reactive people absolves them of responsibility. That's me. That's just the way I am. I am determined. There's nothing I can do about it. He makes me so mad. I'm not responsible. My emotional life is governed by something outside. My control. Hello. I can't do that.
I just don't have the time. Something outside me, limited time, is controlling me. If only my wife were more patient. Someone else's behavior is limiting my effectiveness. I have to do it. Circumstances or other people are forcing me to do what I do. I'm not free to choose my own actions. अब ये क्या है, इन्होंने दिखाया है, सब वर्डिंग दिखाया, आई हैव टू डू इट। तो ये कौन बुलाता है? ये जो सर्कमस्टेंसेस, जो बाकी पीपल जो फोर्स लाते हैं, उसके आदमी बोलता है आई इफ ओनली माय वाइफ और मोर पेशेंट। इसका क्या मतलब हुआ? समवन एल्स बिहेव आपको लिमिट कर रहा है। तो ये सब उन्होंने अलग दिए हैं कि आई एम नॉट फ्री टू चूज, या somebody else is pressurizing me, या आई एम गवर्न बाय समथिंग एल्स। तो ये सारे लिमिटिंग फैक्टर्स है। देयर इज नथिंग आई कैन डू, दे आर ऑल लिमिटिंग फैक्टर्स। और इसमें आदमी जब आता है तो उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। ही विल नॉट कम अप। उसको बहुत सारा ट्रेनिंग मिलेगा तो अलग बात है, और वो ट्रेनिंग लेने को राजी होना चाहिए। He should also be ready to take the training. Yes, madam. Reactive language and We have two proactive language. columns of reactive language and proactive language. So, reactive language, there's nothing I can do. Proactive language, let's look at our alternatives. Reactive language, that's just the way I am. The proactive for that is I can choose a different approach. He makes me so mad. I control my own feelings. They won't allow that. Proactive, I can create an effective presentation. I have to do that. Proactive, I will choose an appropriate response. So reactive will be I can't, proactive, I choose. Reactive, I must, and proactive, I I prefer. prefer. If only I will. If only is the I will. reactive language, and proactive language will be I will. देखो लैंग्वेज में कितना फर्क है। There's nothing I can do. Look, let's look at other alternatives. Yeah. कितना डिफरेंस है दोनों में। Hmm. That's just the way I am. और वो बोलते हैं I can choose a different approach. Hmm. I control my own. मतलब ये आई ज्यादा लिखा है उन्होंने, मतलब वो खुद पे ले रहा है, ये जवाबदारी ले आदमी। तो ये जो आदमी लेता है जवाबदारी, वो आदमी प्रोएक्टिव और पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग। समझो मेरे कंपनी में कुछ होता है, एंड इफ आई टेक नो रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं सब पे डालूं कि अकाउंट नंबर ये नहीं बराबर है, तो व्हाट विल हैपन? द कंपनी विल बी क्लोज्ड। बट इफ आई से एवरीथिंग दैट हैपेंस आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो मेरा काम करने का तरीका कितना बदल जाएगा। अच्छा, दूसरा इन्होंने लिखा मैप का, वो भी करेगा बदला देगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड टेरिटरी। जैसे कि हम बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे इज अ टेरिटरी, उसका एक मैप होता है। तो आपका जो परसेप्शन है, मेन थिंग इज परसेप्शन। हाँ, वो रही है मेरा मेन थिंग इज परसेप्शन। वी हैव टू चेंज द पैराडाइम ऑफ आवर परसेप्शन। तो होता है क्या, एक मैप होता है कि एक परसेप्शन है, एक बिलीफ है हमारा, और एक है हकीकत, मतलब वो है टेरिटरी। तो आपने रॉन्ग मैप लिया, आपको जाना है दिल्ली, आपने ले लिया मैप कहीं इस साइड का, कलकत्ता का या कहीं का, तो वेरी रिच, यू विल रीच कलकत्ता, राइट। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपके परसेप्शन को चेंज करो। तो ये इसके लिए लैंग्वेज काम आएगी। इफ यू वांट टू बी प्रोएक्टिव, ये लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज काम आती है, बिकॉज वर्ड्स मेक द मैन। आप जो बोलते हो होता है, वर्ड्स मेक द मैन। यस मैम, द लैंग्वेज। That language comes from a basic paradigm of determinism. And the whole spirit of it is the transfer of responsibility. I'm not responsible, not able to choose my response. One time a student asked me, will you excuse me from class? I have to go on a tennis trip. You have to go or you choose to go, I asked. I really have to, he exclaimed. What will happen if you don't? Why? They will kick me off the team. How would you like that consequence? I wouldn't. In other words? In other words, you choose to go because my class. I don't know. Think hard. What you think would be the natural consequence of not coming to my class? You wouldn't kick me out, would you? That would be a social consequence. That would be artificial. If you don't participate on the tennis team, you don't play. That's natural.
But if you don't come to class, that would be the natural consequence. ओके, कहाँ से हम लोग So, आए? mm, यस, yeah. द लैंग्वेज कम फ्रॉम द बेसिक पैराडाइम ऑफ द डिटर्मिनिज्म. इन्होंने ये भी सिखाया डिटर्मिनिज्म कैसे होता है. तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ डिटर्मिनिज्म. वन इज जेनेटिक, कि मेरे फादर ऐसे थे, मैं ऐसा हो गया, मेरे दादाजी ऐसे थे. देयर इज अ साइकिक डिटर्मिनिज्म, कि मेरे को बचपन में ऐसा बोला गया तो मैं बन गया. कोई बोला तू गधा है तो अपन गधा बन गया अंदर से. कोई बोला होशियार है तो होशियार बन गए. एंड थर्ड इज एनवायरमेंटल डिसीजन, जिस एनवायरमेंट से उधर क्या चलता है और हम क्या दिखते हैं. तो लैंग्वेज कम्स फ्रॉम अ बेसिक पैराडाइम ऑफ डिटरमिनेशन. आप अपने आप को कैसे डिटरमाइन करते हो, उसका आपका बिलीफ क्या है, उसके ऊपर से लैंग्वेज बनती है. एंड द होल स्पिरिट ऑफ इट इज ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल, यू आर एबल टू रिस्पॉन्ड. तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट एबल टू मेक माई रिस्पॉन्स, उसका क्या होना, वो रिस्पॉन्ड करने का लायक ही नहीं है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिक मतलब ही है, आई एम एबल टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड एबल. इफ यू टेक दैट, यू ब्रेक इट लाइक दैट ना, आपको मजा आएगा, इसका बराबर अर्थ मिलेगा आपको. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने के सामने खाली जवाब देनी. समटाइम यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाटएवर हैपेंस. इट इज नॉट अबाउट टेकिंग जवाबदारी, इट इज अबाउट फीलिंग दैट यू आर इन कंट्रोल. आपके हाथ में, आप कर सकते हो. तो बोलते वन डे स्टूडेंट आस्क मी, विल यू एक्सक्यूज मी. तो बोलते इज इट अ चॉइस, क्या तेरे को जाना जरूरी है. मतलब इन मेरा एक क्लास चलता है, मैं लेता हूँ, दिस अ पेड क्लास. आई चूज पीपल, अरे आई टीच देम टू चूज. देयर आर सो मेनी थिंग्स संगीता मैम, आपको करना पड़ता होगा, आपको शायद पसंद भी नहीं आता बाय चांस, बट दैट यू डू इट, वो आपका काम है. तो आप उसको चूज करिए. सी पीपल हु लाइक सचिन एंड अमिताभ बच्चन गेट टू डू व्हाट दे लव टू, ये लेके they get to do what they love to do, are God gifted. But people like you and me, if we can choose what we do and like it, then we are blessed. We are more blessed than them also. तो वी हैव टू चूज इन लाइफ. जब चूज करोगे तो आप अपने मन से करोगे, दिल से करोगे. आप घर पे खाना बनाओगे संगीता मैम, और आप उसको चूज करोगे तो उसमें जो प्यार आएगा, जो आपका आप दिल से जो करोगे. बिकॉज बाहर का खाना, घर खाने में खाली तेल और इसका फर्क नहीं है कि खाना मतलब वो पूरा खाना वापरते होंगे, कुछ अलग वापरते होंगे, तेल ज्यादा वापरते होंगे. सबसे बड़ा डिफरेंस है दैट यू पोर लव इन इट. तो आई रियली हैव टू, आई रियली हैव टू एक्लेम. तो बोला मुझे जाना ही पड़ेगा. बोलते व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट, दे विल किक मी आउट. व्हाट, हाउ वुड यू लाइक दैट कॉन्सिक्वेंस. बोलते आई वुडंट. तो इन अदर वर्ड्स, यू चूज टू गो बिकॉज यू वांट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टेइंग ऑन द टीम. इन्होंने क्या किया, इसको चॉइस चॉइस में बदली किया. I choose to go because you want the consequence of staying on the team. What will happen if you miss my class? I don't know. Think hard. What do you think would be natural consequence of not coming to class? You wouldn't kick me out, would you? वो पूछ रहा है. That would be a social consequence. That would be artificial. If you don't participate on the tennis team, you don't play, that's natural. But if you don't come to class, what would be natural consequence? जैसे टेनिस पे नहीं जाने से, पार्टिसिपेट नहीं करने से, यू विल नॉट बी एबल टू प्ले. दैट इज नेचुरल. तो ऐसा नेचुरल क्या है इसमें, इफ यू डोंट कम टू माय क्लास, आई गेस आई विल मिस द लर्निंग. दैट्स राइट. तो अभी कहते हैं, सो यू हैव टू वे द कॉन्सिक्वेंस अगेंस्ट द अदर कॉन्सिक्वेंस एंड मेक अ चॉइस. जैसे आप घर पे खाना बनाओगे मैडम, या आप एक बाई रख सकते हो, यू हैव टू चूज. पर आपको लगता है नहीं, कुछ खाना मुझे ही बनाना चाहिए, मेरे हाथ से बनता है, मुझे प्यार देना है, तो यू कैन मेक अ चॉइस कि नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी, या ये तो मैं ही बनाऊंगी. I would love to pour my love in it. It's depending upon what you want to do. पर उसको एक समझिए, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है. बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि इसको पका देना, ये करना पड़ेगा. व्हाट इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस. इधर एक दूसरी औरत बना रही है, और एक इधर आप बना रहे हो आपकी फैमिली के लिए. यू फील नहीं ना, मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, तो एक अलग फीलिंग होती है. और एक बात बताता हूँ, हम लोग प्यार दे नहीं पाते इतना जितना आप लेडीज लोग दे पाती हो, जो आप दे सकती हो ना, हमारे में है ही नहीं. तो यू ऑलवेज थिंक लाइक दैट. मुझे खिलाना, जैसे मेरे घर पे मेरी बहू है, भाई है, बोलते मुझे खाना खिलाना अच्छा लगता है, मेरी बेटी है वो खाना बनाती है. इट्स नेचुरल फॉर देम. आई विल से एंड आई सजेस्ट टू ऑल कि हमको अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए खाना कैसा बनाना है. मगर लव देना वो नेचुरल
औरतों का काम है अपना बात बोलने, ज्यादा ही होता है कुछ। एंड दे रियली, मतलब आप लोग इतने ताकतवर होते हो, द स्ट्रेंथ इन यू, इफ एवरीबडी फॉल इल एंड यू आर आल्सो इल, यू विल टेक केयर ऑफ अदर्स। तो ये ताकत भी आप लोगों mm, में, और कहाँ से mm. आती है? प्यार से आती है, फ्रॉम लव। लव इज द बेस्ट एंटीडोट। Anyway, we got out of this. So we were talking कि consequence को ढूंढना हमको, नेचर को, बिफोर थोड़ा चूजिंग थोड़ा समथिंग। ऊपर थोड़ा ऊपर जाना है सर। हाँ, तो पढ़ लेना मैंने। हम्म That's right. So you have to weigh the consequences, but never say you have to do anything. ऐसा मत बोलो। I choose to go on the tennis trip, he meekly replied, and miss my class. I replied in the mock disbelief. उसने मजा किया, उसने चूज किया, मुझे इससे वो ज्यादा पसंद है। He understood the consequences and then he choose. Yes, ma'am. It A is a very serious important thing, problem ना with संगीता मैडम। reactive language. संगीता हाँ। मैडम, अभी ये जो हमने पढ़ा ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम्म आप चूज करो चीज को लाइफ में, जबरदस्ती हम्म मत लो। व्हेन यू चूज ना, तो आपको उसमें ज्यादा मजा आएगा। नहीं तो क्या, हाँ आप गिल्ट फीलिंग में रहोगे कि मैंने क्लास मिस किया, क्लास मिस उधर। मैं आपको और एक बात, एक मस्त बात बताता हूँ आपको। एक आदमी है, ही गोज टू सी अ डांस, ओके, हम्म हम्म और वो नाम लेता है, उसको ऐसा लगता है कि एक दूसरा उसका दोस्त हो जाता है एक कीर्तन में, और वो सोचता रहता है कि अरे वो तो मजा कर रहा है, डांस देखने गया, ये देखने गया, म्यूजिक चल रहा है हम्म उधर, और ये बंदा बोलता है मैं आया इधर और मैं हम्म मिस किया भगवान को। हम्म तो बोलते हैं ज्यादा किसने किया? तो हम्म उधर जो अभी मजा करने गया था ना, किसी कारण से उधर गया था, उसने मिस किया भगवान, तो उसने भगवान को ज्यादा याद किया। और ये अभी उधर हम्म बैठे हुए भी, वो कहाँ था? हम्म वहां था जहाँ म्यूजिक चल रहा था। हम्म तो दिस इज अ प्रॉब्लम व्हेन यू डोंट चूज, यू नो। हम्म। जबरदस्ती नहीं करें, चूज करेंगे तो आपको फायदा होगा। यस मैम। Yeah, if you choose, you will be more responsible also. यस, You know that you have chosen it, so you'll यू be हैव more चूजन इट बाय responsible. योरसेल्फ। Hmm. So, a serious problem with reactive language is that it becomes a self-fulfilling prophecy. People become reinforced in the paradigm that they are determined, and they produce evidence to support the belief. They feel increasingly victimized and out of control, not in charge of their life or their destiny. They blame outside forces, other people, circumstances, even the stars, for their own situation. At one seminar where I was speaking on the concept of proactivity, a man came up and said, Stephen, I like what you're saying. Every situation is so different. Look at my marriage. I'm really worried. My wife and I just don't have the same feelings for each other we used to have. I guess I just don't love her anymore and she doesn't love me. What can I do? The feeling isn't there anymore, I asked. That's right, he reaffirmed. And we have 3 children we are really concerned about. What do you suggest? Love her, I replied. I told you the feeling just isn't there anymore. Love her. You don't understand. The feeling of love just isn't there. Then love her. If the feeling isn't there, that's a good reason to love her. But how do you love when you don't love? My friend, love is a verb. Love, the फैंटास्टिक। feeling, is the fruit of love, the verb. So love her, serve her, sacrifice, listen to her, empathize, एम्पैथाइज, appreciate, affirm her. Are you willing to do that? टू डू दैट। यस, एक मिनट मैडम। सो व्हेन अ पर्सन इज रिएक्टिव, कहा गया, अ सीरियस Yeah. प्रॉब्लम। Hmm. रिएक्टिव आदमी होता है ना, इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है इसकी। मतलब वो Hmm. रिएक्ट करता है, वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगी, उसके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। दे विल प्रोड्यूस द एविडेंस टू सपोर्ट द बिलीफ। उनका जो बिलीफ होता है ना, नेगेटिव बिलीफ, उसको सपोर्ट करने वो एविडेंस भी प्रूव करे, पैदा करेंगे। एंड उनको, मतलब दे विल फील इंक्रीजिंगली विक्टिमाइज्ड, Hmm. कि मैं ही विक्टिम हूँ, मुझे ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, एंड आउट ऑफ कंट्रोल, बस मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे, आई एम नॉट इन चार्ज। वो कौन करता है? जो आदमी नेगेटिव होता है वो। पॉजिटिव आदमी क्या करे, वो हाथ में लेगा, he will take the decision, he will become proactive. Hmm. They will blame outside force instead of blaming themselves, या अपने अंदर की ताकत को बढ़ाने से they will blame outside force. तो बोलते हैं, एक सेमिनार में उन्होंने बोला, नहीं मस्त बताया कि आई डोंट लव, और ये लिखा ना, ये तो हमने पढ़ लिया। इसका मेरे Hmm. लास्ट का लगा ना, लव इज अ Hmm. वर्ब। ये Yeah. मेरे बोलता है जस्ट लव और Hmm. लव से बोला, बोलते यू डोंट अंडरस्टैंड, बोलता है अंडरस्टैंड,
And that is the Hmm. best way to do something. If you don't feel like loving her, not loving her. Yeah. What the love is a verb. ये कितना मस्त लगा है. Love is a verb. Yes, it is definition. It is defining something. And the feeling out of that is the fruit of love. Hmm. So love her, serve her, sacrifice, listen to her, empathize. Yeah. इतना सुपर लिखा है. Hmm. Appreciate, affirm her. Are you willing to do that? उसको भी पूछो, appreciate करो, उसको पूछो. Yes, ma'am. Hmm. आप कुछ Like बोल रहे थे? all the relationships, no, you can't take any relationship for granted. You have to work hard to maintain the relationship. So if you Yes. feel that the love has decreased, you have to work on it. You have to love more to, Love you more. know, you have to sustain the relationship. वो होता है ना? You can't Yes. take any relationship for granted. In Yes, the great absolutely. literature of all progressive societies, love is a verb. Reactive people make it a feeling. They are driven by feelings. Hollywood has generally scripted us to believe that we are not responsible, that we are a product of our feelings. But the Hollywood script does not describe the reality. If our feelings control our actions, it is because we have abdicated our responsibility and empowered them to do so. Them to do so. Yes. Proactive people make love a verb. Love is something you do, the sacrifices you make, the giving of self, like a mother bringing a newborn into the world. If you want to study love, study those who sacrifice for others, even for people who offend or do not love in return. If you are a parent, look at the love you have for the children you sacrificed for. Love is a value that is actualized through loving actions. Proactive people subordinate feelings to values. Love, the feeling, can be recaptured. Can be recaptured. It is great literature of all progressive society. Love is a verb. Reactive people make it a feeling. Reactive people make it a feeling. They are driven by feeling. Hollywood people ने जो मतलब Hollywood ने बताया कि you are feeling. They are not telling you truth. Because आप देखना कि if you want to love somebody now, how many people is required? Singdana, when you love somebody, how many people are required? Only you. You can love Only you. everybody. You start loving. उसका वो अपना आप हो जाएगा उसमें चेंज आएगा. Hmm. तो प्रोएक्टिव पीपल क्या करते हैं? They will treat love as a verb. वो करते रहेंगे and feeling will come. It will evolve. It will get evolved like mother. She does without any क्या होता है? What do you call that word यार? वो कुछ चाहती नहीं है, बस वो करती रहती है. As a mother, No expectations. हाँ, no expectation. Hmm. ना वो ना क्या अरे without any no expectation वही बात था man. Hmm. So without any expectation the mother will do. Hmm. So if you are a parent, look at the love you have for the children. You sacrificed for. So love is a value that is actualized through loving action. वो कहाँ से होगा? Just by loving action. तो ये मस्त लिखा है. Proactive people subordinate feelings to values. जो आदमी प्रोएक्टिव वो वैल्यू को महत्व देता है, फीलिंग क्यों नहीं? Feelings will appear. They what they want. Love the feeling can be recaptured. Love is the feeling that can be recaptured. Yes. When you fight with your spouse, that's हाँ. what happens. No? हमको तो first feelings के ऊपर हम fight करते हैं. जो हाँ. ना फिर Yes. हमको ना हम सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं करना है to I mean continue the relationship. You say okay, now the values, you feel gratitude, what all he has done good for you, and then you come Yes. back and you love them more, and then the fight goes away. That's what और happens, no? बस That's ना how. एक जगह मैंने आपको कुछ भी करना है ना एक ग्रेटिट्यूड का मेरे को इतना अच्छा क्यों लगा ना मैं हाँ, यू हैव टू कम टू द बेसिक ये पहले आप क्या हो तो ग्रेटिट्यूड ना आपको बेस पे लेके आता है वेयर यू आर स्टैंडिंग आपको इतना मक्कम करता है आपका जो स्टैंड है ना उसको इतना मजबूत कर देता है कि आपको हिला नहीं पाएगा फिर आपको गुस्सा आएगा अभी तो भी चला जाएगा जल्दी आपको डिप्रेशन में आएगा तो इमीडिएटली विल कम आउट ऑफ इट डिप्रेशन में आएगा नहीं थोड़ा निगेटिविटी आएगी तो भी एंग्जाइटी आएगी तो भी विल कम आउट ऑफ इट क्यों आपका जो पाया है ना जो भी है आप जहां भी हो वो बोलते हैं बी इन ग्रेटिट्यूड वो सबसे अच्छी बात है चलो एनी विल गो अहेड नो कंसर्न सर्कल ऑफ कंसर्न दिस इज सर्कल ऑफ कंसर्न एक बड़ा सर्कल है द सर्कल ऑफ कंसर्न सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ओके सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इसमें Another excellent way to become more self aware regarding our own degree of proactivity is to look at where we focus our time and energy. We each have a wide range of concerns.
our health, our children, problems at work, the national debt, nuclear war. So we could separate those from things in which we have no particular mental or emotional involvement by creating a circle of concern. सर्कल ऑफ कंसर्न, हमको सर्कल ऑफ कंसर्न बनाना है। बहुत सारे कंसर्न है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। Another excellent way to become more self-aware regarding our own degree of productivity is to look at where we focus. Where you focus, the energy will flow. And the whole world is about energy. When you are very, very positive, Sangeeta ma'am, और आप बहुत खुश हो, you are lot of energy. There is energy. You become more and more energy. And when you are depressed or when you are thinking negative, you become more of matter. वो एनर्जी कन्वर्ट होती मैटर में, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, आपका ऑरा एकदम सिकुड़ जाता है। बट व्हेन यू आर इन फुल फ्लेज लव एंड हैप्पीनेस, योर एनर्जी इज ट्रिमेंडस एंड यू आर देयर इज ऑरा कमिंग आउट ऑफ यू, नो, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड दैट यू आर मेकिंग, दैट इज कॉल्ड ऑरा, दैट इज अ ब्यूटीफुल ऑरा, एंड दैट विल अट्रैक्ट व्हाट यू लाइक टू डू। बिकॉज जब भी आप रोते हो ना, आप अट्रैक्ट नहीं करते किसी को, पीपल रिपेल्स, यू नो, यू रिपेल पीपल, so negativity will always repel and positivity will always attract people. So we have to make this circle of concern. जो अभी वो जैसे था ना, वो एक वो कौन सा था, सेटल गिरने वाला था ना बीच में, तो आदमी बहुत पहले की बात है, तो स्काईलैब जो गिरने वाला था ना पहले एक जमाने में आया था, वो गिरा कहा अरेबियन सी में, मगर पीपल in Hyderabad, people in North, they died just by concern क्योंकि मेरे पे गिरेगा, तो गिरा भी नहीं है, and that concern was so much. So you have to create circle of concern, उसमें से circle influence निकालना आपको कि what can influence you. Yes, ma'am. As we look at those things within our circle of concern, it becomes apparent that there are some things over which we have no real control and others that we can do something about. We could identify those concerns in the latter group by circumscribing them within a smaller circle of influence. By Yes. determining which of these two circles is the focus of most of our time and energy, we can discover much about the degree of our proactivity. हाँ, तो हमको सर्कल ऑफ कंसर्न से निकल के जो जिस पे हम काम कर सकते हैं, जिस चीज पे हम काम कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, उसमें लाना है एंड मेक अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इट इज वेरी इजी, बिकॉज जिस पे हम काम ही नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, उस पर चिंता करे फायदा क्या। बोलते हैं ना कि बेटा अच्छा है तो क्या चिंता है, वो खुद देख लेगा, और बेटा बिगड़ा हुआ है तो क्या फिक्र है, वो ऐसे भी कुछ रखने वाला नहीं है, आप कितना भी कमा लो। इसी तरह ये सर्कल ऑफ कंसर्न भी ऐसे ही है, जहां आपका बस में चलता है उसकी चिंता क्यों करें, जहां आप कुछ कर सकते हो तो भी फिक्र नहीं, आप करते रहो, बी एक्टिव, बी प्रोएक्टिव, डू समथिंग अबाउट इट। So we can discover much about degree of our productivity in this. We can understand where we have to work, कहाँ हमको फोकस करना है, और ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को हमको बढ़ाना है। देखिए, सर्कल कंसर्न, बाहर की कंसर्न कम करना है और इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है, उसको बड़ा करना है। Proactive focus, positive energy enlarge the circle of influence. Positive energy will enlarge the circle of influence. Yes, ma'am. Proactive people focus their efforts in the circle of influence. They work on the things they can do something about. The nature of their energy is positive, enlarging, and magnifying, causing their circle of influence to increase. Reactive people, on the other hand, focus their efforts in the circle of concern. They focus on the weakness of other people, the problems in the environment, and circumstances over which they have no control. The focus result in Their focus results in blaming and accusing attitudes, reactive language, and increased feelings of victimization. The negative energy generated by that focus, combined with neglect in areas they could do something about, causes their circle of influence. influence to shrink. जब आदमी काम करता है अपने जिस पे इन्फ्लुएंस है उसका, जो चीज पे वो कर सकता है, जिस पे काम करेगा विद पॉजिटिव एनर्जी, देन इन्फ्लुएंस विल इंक्रीज, वो काम और बढ़ेगा एंड विल डू बेटर। बट रिएक्टिव पीपल वो क्या करेंगे, दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट द कंसर्न, वो काम करते हैं, उसने क्या होता है, उनका काम करना बंद होता है, दे कैन नॉट डू प्रॉपर वर्क और दे विल नॉट डू एनीथिंग, और वो क्या होता है, द प्रॉब्लम बढ़ता है, तो सर्कल ऑफ कंसर्न विल इंक्रीज और अदर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस विल बिकम जीरो आल्सो। जैसे करते रहते हो, वो क्या ब्लेम करेंगे,
इसका मिस्टेक है, उसका मिस्टेक, मतलब दे विल नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे विल ऑलवेज बी क्लीनिंग। और हमेशा बस मेरे को इसने गिराक बनाया, मेरे पे डाल रहे हैं, मेरे पे ये कर रहे हैं। दे विल ऑलवेज टॉक एज इफ दे आर बीइंग विक्टिमाइज्ड। So the negative energy generated by that focus, combined with neglect in the area, they could do something about cause their circle of influence to shrink. तो सर्कल इन्फ्लुएंस श्रिंक हो जाएगा, इतना श्रिंक होगा कि खत्म भी हो जाएगा, कहीं पूरा खत्म नहीं सकता है पर बहुत कम है। ये देखो, ये सर्कल इन्फ्लुएंस कम हो रहा है और सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ रहा है। दे आर बीइंग कंसर्न फॉर नथिंग, कोई रीजन नहीं है, फालतू बातों पे वो लोग ध्यान देके बैठे हैं। ये पुराना है, बस इतना ही है। यस। As long as ये we are working in our circle of concern, we empower the things within it to control us. We aren't taking the proactive initiative necessary to effect positive change. Earlier, I shared with you the story of my son who was having serious problems in school. Sandra and I were deeply concerned about his apparent weaknesses and about the way other people were treating him. But those things were in the circle of concern. As long as we focused our efforts on those things, we accomplished nothing except to increase our own feelings of inadequacy and helplessness and to reinforce our son's dependence. It was only when we went to work in our circle of influence, when we focused on our own paradigms, that we began to create a positive energy that changed ourselves and eventually influenced our son as well. as well. By working on ourselves instead of worrying about conditions, we were able to influence the द conditions. कंडीशन। मैडम देखो, आप तो टीचर हो, ये आपके बहुत काम का है। Hmm. पेरेंट्स क्या करते हैं ना, मैं वो बच्चे को लेके आते हैं काउंसलर के पास, बोलते हैं इसको सिखाओ। वेयर इज दे हैव टू अंडरस्टैंड कि द वे दे स्पीक, तू समझता नहीं है, तेरे को आता नहीं है, तू तो पागल है। दे स्पीक सो मेनी वर्ड्स Hmm. जिससे वो बच्चा उस पर इन्फ्लुएंस होता है। एंड देन दे Hmm. टेल द काउंसलर टू टीच हिम। और वो कुछ नहीं कह सकते, वो रोज कोशिश करते हैं, होता कुछ नहीं है। जब पेरेंट खुद, जैसे इन्होंने बोला, हमने अपना पैराडाइम शिफ्ट किया, they were trying to work on their child and they were not able to do anything, they were not successful. Why? Because they were worried about the circle of concern. Hmm. कोई क्या बोलेगा, वो कैसा दिखेगा, it looks so odd and this and that. But when they started working on his strength, whatever he knows, whatever he can do, they succeeded. He become better person. और ये लड़का बहुत होशियार निकला बाद में, और अभी याद नहीं आ रहा, दिखा था, याद नहीं आ रहा मेरे को। He become a better person. हो सकता है आदमी पढ़ाई में होशियार नहीं है, जैसे मेरी बेटी थी, उसको पढ़ाई नहीं पसंद था, बट शी इज गुड, डूइंग गुड। उसको सोशल ये पसंद था, मीडिया का ये सब था ना। तो शी सेड आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू बी क्रिएटिव, लेट्स डू दैट। तो शी वाज सरप्राइज, बोला क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स से कुछ नहीं होता है, तो चलो अच्छा काम कर। एंड शी सक्सीडेड, और वो अच्छा कर रही है, शी इज हैप्पी आल्सो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी teach our child, we encourage child to do what he is the best at, not How to we choose. should not influence him by something that is not his cup of tea. हम वो करते हैं। सर तो एक और बात, हम सब ना सर्कल ऑफ कंसर्न में आते हैं पहले। व्हेन वी हैव एन हाँ, ऑब्स्टेकल, वी हैव अ प्रॉब्लम, फर्स्ट हम सब सर्कल ऑफ कंसर्न में ही आते हैं, अरे मेरा yes, बच्चा ऐसा हो गया क्यों। बट द थिंग इज वी हैव टू कम आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। इफ यू शुड नॉट स्टे लॉन्गर इन दैट सर्कल ऑफ कंसर्न, immediately yes, you have to find out the solution and come to the circle of उसके लिए influence. बेस्ट तरीका है बी इन ग्रेटिट्यूड। मैं वो बुक की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बोलता हूँ, जनरल, कि आपको दिख रहा है ना, एक तो ये मिरर वर्क आपने नहीं किया शायद, मिरर किया की किया सूथिंग सर, किया किया ना। किया। हाँ, तो इवन दैट इज वेरी गुड, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, बेस्ट है वो। और ग्रेटिट्यूड में रह के और मिरर वर्क करोगे ना मैडम, कितना मजा आता है। आई डू इट नेचुरली नाउ, अभी क्या रोज किया ना, इतना मैं पढ़ा, मतलब सिखाया ना सबको, तो मैं खुद सीख गया हूँ। इट इज ऑलवेज लाइक दैट। आपको तो बोला, यू आर टीचर, व्हेन यू टीच समबडी यू लर्न मोर। तो मेरा ये Yes, आदत sir. सा हो गया अभी। तो अभी क्या है, देखो ये मस्त लिखा है, द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इसका मेन हो गया सर्कल इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न बहुत छोटा हो गया है। चलिए कंप्लीट, इतना ही भाग गया, चलेगा Oh. लास्ट पार्ट ना। Because, yeah, because of position, wealth, role, or relationships, there are some circumstances in which a person's circle of influence is larger than his or her circle of concern. This situation reflects a self-inflicted emotional myopia, another reactive, selfish lifestyle focused in the circle of concern. Though they may have to prioritize the use of their influence,
Proactive people have a circle of concern that is at least as big as their circle of influence, accepting the responsibility to use their influence effectively. Yes. So because Direct of position, wealth, role, or relationship, there are some circumstances in which a person circle of influence is larger than his or her circle of concern. अमुक चीज होती है जहाँ बिकॉज ऑफ मतलब पोजिशन, जो पोजिशन होता है, किसी का वेल्थ है, किसी का कोई ऐसा रोल है, रिलेशनशिप ऐसी है कुछ जहाँ उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है देन द सर्कल ऑफ कंसर्न. द सिचुएशन रिलेटेड अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इमोशनल मायोपिया. मायोपिया कम दिखना. अनदर रिएक्टिव सेल्फिश लाइफस्टाइल फोकस्ड इन द सर्कल ऑफ कंसर्न. तो द सिचुएशन रिफ्लेक्ट्स अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इमोशनल मायोपिया कि आपका क्या एक जगह इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बाकी नहीं है, तो आप उसी में काम करते रहते हो. तो इट इज एक माइक्रो छोटा सा आपका दिखा, आप छोटा दिखते हो. अनदर रिएक्टिव सेल्फिश लाइफस्टाइल, वो क्या होता है, इट इज फोकस्ड ऑन लाइफ ऑफ कंसर्न ओनली. अमुक जगह आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बाकी पे क्या है, यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक व्यू. So though they may not have to prioritize the use of the influence, though they may have to prioritize the use of their influence. Proactive people have a concern that is at least as big as circle of influence. दोनों सेम तो होना ही मिलता है. Mostly it is more than the circle of influence is bigger than the circle of concern. So what you have to do, accepting the responsibility to use their influence effectively. जहां भी आपका इन्फ्लुएंस को इफेक्टिव वापरिए, उसका फायदा लीजिए एंड यू मेक इट बिगर. यस मैम. तो कल हमारे ये चालू है. अच्छा, मैंने क्या बोला संगीता मैडम सबको कि लेट अस रीड 20 या 25 पेज एवरी डे. मैं समरी बनाता हूं एंड देन वी डिस्कस समरी, सो विल कवर फास्टर इफ यू ऑल एग्री. ओके, आई विल शेयर द समरी. उसमें ये फोटोग्राफ भी होंगे, तो वी कैन रीड ओनली दिस मच. इतना पढ़े, बट आप खुद पढ़ोगे ना तो आपको और मजा आएगा. आपको फास्ट पढ़ना है. डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल अंडरस्टैंड टुमारो. आप फटाफट 20-25 पेज पढ़ लो. हाँ सर, ये जतिन गुड मॉर्निंग. बोलो ना. सर मैं कह वेरी रहा गुड हूँ मॉर्निंग. सर, मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप इतनी मेहनत मत करो. मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, ठीक है. आप क्या करो, मैं जैसे दूसरे ग्रुप्स में हूँ ना सर, 20 पेज पढ़ने को कह दो. ओके, हाँ ठीक है. अगर मैं सीखना चाहता हूँ ना तो मैं 20 पेज पढ़ सकता हूँ दिन में, आराम से. आप प्लीज, हाँ आप प्लीज हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो ना. नहीं, मैंने क्या हुआ है, डोंट वरी, मैंने समरी समझ बनाया हुआ है. जतिन मैंने समरी बनाया हुआ है, डोंट वरी. खाली उसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, बाकी बनाया हुआ है. अच्छा, हाँ, ये तो इतना बनाना मजा है कि 20-25 पेज पढ़ो, समरी बनाओ, मेरा पूरा दिन जाएगा. ये क्या हुआ, डोंट वरी. ये मेरा शौक है जतिन भाई, मैं पढ़ता ना उसके समरी बनाता रहता हूँ. कई लोग 2 दिन मेरा शौक आते है. हैं, कई लोग 1 दिन आते हैं. कोई बात नहीं, दो भी आए ना, आई एम हैप्पी. सत्य में रियली मजा आता है व्हेन आई डू दिस ना. मेरे को बहुत आनंद मिलता है एक्चुअली. आई एम बीइंग पेड ऑफ, आई एम बीइंग पेड, यू नो, इनडायरेक्टली थ्रू गॉड. और भगवान की इच्छा है ना, मैं 2 आदमी तो है ना, 3 आदमी तो है ना. नितिन जी कितना अच्छा है. गॉड, यू नो, दे से ना कि वो एक श्लोक याद नहीं है, उसमें ऐसा लिखा था संगीता मैम, आपको शायद श्लोक मालूम होगा. वो श्लोक याद नहीं आ रहा है कि देता मैं हूं, करता मैं हूं. अरे करते आप हो और देता मैं हूं, बिकॉज यू आर गिविंग थ्रू मी. तो मैं कितना नसीबदार हूं. तो करता भगवान ही कराता है. आई एम जस्ट अ पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, टू होम इट इज गेटिंग डन. तो ये ऊपर वाले की इच्छा है, अपनी क्या इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं. बस उसकी इच्छा पे चलते रहे, अच्छा ही मार्ग मिलेगा. ओके, तो कल मैं लिखता हूँ बाद में कितना पेज पढ़ना है. 20 पेज तो 20 पेज लिखते हैं. ओके, ठीक है, चलो. ओके, थैंक यू सो मच हरीश. थैंक यू संगीता जी. संगीता, यू आर फ्रॉम, हाँ, यू आर फ्रॉम साउथ साइड राइट, एंड यू आर अ टीचर. एंड बीच में आपके बच्चों की एग्जाम थी, ऐसा कुछ था अपना, राइट? बच्चे वापस घर है थोड़े. दे वर इन द हॉस्टल्स. ये मेरे को आज तो लेट हो जाएगा, पता ना 5-6 बजे. 5-6 बजे पूरा है कोई. अच्छा, हाँ 5-6 बजे तक आ जाऊंगा. सर आप निकल के जाओ, 6 बजे तक सही नहीं. No, I was telling that I was feeling happy that I could read today. I could come and join you all today. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much.